क्लास आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व इज अ ह्यूज एरिया ऑफ लैंड where plants, animals and the tribals living in that area are conserved and protected. Animals living in that area are conserved and protected. In our expedition today, we will be visiting the famous Nilgiri Biosphere Reserve, otherwise known as NBR in India. The plants, animals, birds and microorganisms found in this area are simply unique. These form the biodiversity of the area. The Nilgiri Biosphere Reserve is the first Indian biosphere reserve set up in 1986, spread over 3 South Indian states, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. It comprises of a number of national parks and wildlife sanctuaries. What you are seeing here is the flora and fauna found in NBR. So what are flora and fauna class? This we have already discussed in class, so you people might be knowing, no? अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि फ्लोरा और फोना क्या होते हैं. The animals and birds in a particular habitat are known as the fauna, while the plants and trees are So the animals are known as fauna and the plants are known as flora. Is it clear? Flora and fauna क्या होते हैं? referred to as the flora. Next is endemic species. What are endemic species? This is the Malabar squirrel. It is found in NBR. This is an endemic species. So what are endemic species? These species are confined exclusively to a particular location. So what are endemic species? Species found exclusively in a particular location are known as endemic species. Is it clear? The species that are particularly exclusively found in a particular location are known as endemic species. आप लोग दोबारा रिपीट कीजिए मेरे साथ. Species found exclusively in a particular location are known as endemic species. And hence known as endemic species. Our next destination is the Wayanad Wildlife Sanctuary in Kerala. Like the reserve forests, the wildlife sanctuaries provide protection and appropriate living conditions to wild animals. There's the blackbird. This is a threatened species in the wildlife sanctuary. Any
group of living organisms that is reducing in number at an alarming rate is threatened species. What are threatened species? Any group of living organisms that is reducing in number at an alarming rate. So, a law is passed prohibiting killing or capturing of animals in these wildlife sanctuaries. Now comes National Park. Mudumalai National Park is an example of national park. We are now at the Mudumalai National Park. The most important tourist attraction here is the elephant camp. The elephant camp was established to create a workforce of elephants for timber extraction. This national park hosts a large variety of flora and fauna. Apart from this, it also houses the famous Tiger Reserve. Tigers are the most common species that are disappearing from the forests. So the question that came in girls' mind is कि tigers के लिए ही particularly क्यों area बनाया गया है? Because tigers are disappearing from forest, इसलिए tiger reserve को बनाया गया. So, the government of Tamil Nadu started an initiative. प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में क्लास हमने अपनी एनसीईआरटी बुक्स में भी पढ़ा था, ठीक है. दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट टाइगर्स बिकॉज टाइगर्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे थे, ठीक है. तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन. टाइगर पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करा गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु. Known as Project Tiger to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. The tiger falls under the group of endangered species. What are endangered species? A species whose numbers are so small that it is at a risk of extinction, completely removed from the earth. इसका मतलब, ठीक है, इसको बोला जाता है endangered species. Endangered species क्या होते हैं? Species whose numbers are so small that they are at a risk of extinction. Is it clear? Endangered species क्या होते हैं? ऐसे species जो extinction के risk पर हो, ठीक है. What are endangered species? Endangered species are those species that are small in number and are at a risk of extinction. Since we have a lot of species facing extinction, we follow a method of recording this information in a book known as the Red Data Book. Now There are different red data books for plants, Red Data Book. Red Data Book क्या होती है? animals, and other species. Our last destination for today is the Vedantangal Bird Sanctuary. Can you think of species that have become extinct? Discuss this in class and share your ideas. So these are some examples of the species that have become extinct. See, question was asked to you, can you think of species that have become extinct? Extinction, what is extinction? Extinction refers to the end of species.
किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का एंड खत्म होना और उस पर्टिकुलर स्पीसीज के एनिमल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो लेट अस लुक एट द फ्यू स्पीसीज दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट। तो ये आपको कुछ स्पीसीज के एग्जांपल्स दे रखे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। डोडो बर्ड, क्वागा, ठीक है, ऑल दीज एनिमल्स और बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। These are the Now is what is migration? Migration क्या होता है? Migration हमने क्लास में भी डिस्कस कर रखा है क्लास कि जब बर्ड्स एक प्लेस से दूसरे जगह पर जाते हैं, ठीक है, bird stocks that come from far off places to breed. They breed twice a year before leaving the sanctuary. Due to factors such as changes in weather conditions, these birds तो ये बर्ड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्यों आ जाते हैं? क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेदर कंडीशंस दीज बर्ड्स फ्लाई टू न्यू हैबिटाट्स। इज इट फाइन? क्योंकि वेदर कंडीशंस में चेंज होने के कारण ये बर्ड्स क्या करते हैं, ये बर्ड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक फ्लाई करते हैं, ठीक है, बिकॉज जो पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस होते हैं जिस एरिया से ये फ्लाई कर रहे हैं वहाँ सूटेबल नहीं होते इनके अकॉर्डिंग, दैट इज वाई ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक fly फ्लाई from far off places to reach a new habitat. They are known as migratory birds. और ऐसे बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। Hope you had a fun-filled and informative experience. Let's look at what we've learned so far. So what is biosphere reserve? Area meant to protect biodiversity. Then wildlife categorized in two parts, flora and fauna. Flora are the plants and fauna are the animals. Then problems are associated with them, that is deforestation, killing of animals, threatened species, endangered species and extinct species. These are the problems associated and the solutions are to build biosphere reserves, build national parks, to build sanctuaries, educate people about that they should not cut trees, they should conserve and build these protected areas, enforce laws. लॉज किस तरह से इन्फोर्स करे जाने चाहिए क्लास? जिस तरह से पोचिंग होती है, पोचिंग को बैन करना, ठीक है, इस तरह से लॉज डेवलप होने चाहिए ताकि हम इन प्रोटेक्टेड इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर सके, अपने जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सके। बिकॉज आपने ये देखा कि किस तरह से जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आपस में एसोसिएटेड है, किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को बेनिफिट होता है इन प्लांट से, इन एनिमल से, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए, किसी तरह से भी एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। और इनके सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स बिल्ड करने चाहिए, नेशनल पार्क्स बिल्ड करने चाहिए, सेंचुरीज बिल्ड करनी चाहिए और लोगों में इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि इन लोगों को डिफोरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो क्लास हियर इज अ क्विज फॉर यू जिसके आपको आंसर्स करने हैं। प्लांट आर प्यूरिफायर्स विच एनवायरमेंटल चेंज हैज टेकन प्लेस ड्यू टू फॉलिंग ऑफ ट्रीज। ट्रीज को काटने के चक्कर में क्या क्या एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं वो आपने बताने हैं। Plants are purifiers which environmental change has taken place due to falling of trees.
holes in ozone layer, eutrophication, that is, last one is global warming. So you have to answer out of these three options that which one is correct. Which environmental change has taken place due to the falling of trees? So what will be the answer class? आप लोग फटाफट से मार्क करिए, then I'll tell you the answer. Which environmental change has taken place due to falling of trees? That is global warming. Which environmental change has taken place due to falling of trees? That is global warming. Is it clear? Next is environmental area where a particular organisms live is called a ecosystem, habitat, settlement और enclosure. आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि उस एनवायरमेंटल एरिया का क्या नाम है जहाँ पर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं. दैट इज ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, इकोसिस्टम, हैबिटाट, सेटलमेंट, इंक्लोजर. फटाफट से क्लास मार्क करो, देन यू कैन मैच द आंसर. So the answer for this one will be habitat. The environmental area where a particular organism lives is also called habitat. Is it clear? Environmental area where a particular organisms live is called a habitat. Is it clear? Next is, in a forest, when we look up the branches of a tall tree, look like a roof over the other trees, what is this called? In a forest, when we look up the branches of the tall trees, जब हम एक forest में tall trees की branches देखते हैं, that look like a roof over the other trees, उनको क्या कहा जाता है? Crown, wood density, cover और canopy. You have to mark your answers. Answer will be canopy. Answer will be option number 4, that is canopy. Next is, what are organisms living on dead and decaying organic matter called? ऐसे organisms जो dead और decaying matter पे live करते हैं, उन organisms को क्या कहा जाता है? Heterotrophs, autotrophs, saprotrophs और parasites. You have to tell the answer. Please mark your answers. Answer will be, class, what will be the answer? Answer is saprotrophs. Answer is saprotrophs. Okay. With this, your chapter gets completed. कल हम एक बार क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है? फिर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो आंसर्स की पीडीएफ है आई विल सेंड यू. कल एक बार हम आंसर्स डिस्कस कर लेंगे, सो आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है? तो आज आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा कि आप लोगों ने ये चैप्टर रीड करना है. रीड करने के साथ साथ जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं आपने वो फाइंड आउट करने हैं. इज इट क्लियर क्लास? ओके, कल हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू.